You have different features here, so you can take advantage of it. That is the best you can do. A lot of features are here with a different flavor. The different features are here. Okay, yesterday we were doing passive voice. So have you got the basic idea what is passive voice? Passive voice means what is being done rather than who is doing that. We are not interested who is doing that. We are interested what is being done. Let me share the screen as well. Wait for a while. Screen. Okay, I'll explain from the Sarasiv's materials as well. Yesterday I couldn't do it. Today I better do it. Okay, that is active voice and passive voice when the actor is and the doer is unknown. Okay. Okay, let me read as well. You want to unclear about who's responsible and you want to avoid naming the actor in order to kind of prevent the actor from getting in trouble. Achha, let me tell you one thing, why we are using passive voice whenever we are the hiding the name of doer of an action. Yesterday I told you, we do not want to let you know who is doing that and who is the doer of an action. If you want to hide, the best is that use the passive voice. Like incorrect information was given. So who did it? We don't know. And we are not interested as well. Or if you want to hide. So whenever you want to hide who is doing and what is being done, who is doing that? So you better use passive voice. We are not interested who is doing that, so use passive voice. If you want to, if you are interested who is doing that, so you can use active voice. If you are interested the doer of an action, who is the doer of an action? So you can use active voice. If you are not interested who is doing that, so you can use passive voice like mistakes were made. I said गलतियां की गई थी, but who did it? We are not interested. So that is why we can use passive voice. Incorrect information was given. Incorrect information दी गई थी. Who joined it? We don't know. And we don't want to know. और हम जानना भी नहीं चाहते. We are talking about the general truth. Like rules are made to be broken. Rules बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए. The rock planet of our solar system were formed over 4 billion years ago. Okay. In the early 90s, music was recorded on the rubber disc or the wax cylinders. That is the passive voice as well. We don't know who did it and we are not interested. So what is being done by whom? So you need to know that is the passive voice. You may want to emphasize a person or thing acted on. For example, it may or may topic, or you want to emphasize the action and not the actor and doer. Achha, if you don't want to emphasize who is doing that, so you can act on the things you are focusing. Like insulin was first discovered in 1921 by the researcher at the University of Toronto. It is still only the treatment available for diabetes. So we are focusing on insulin rather than who did it. So he said, if you want to emphasize a person or a thing who acted upon it, for example, it may or may not be the main topic, you want to emphasize the action, not the doer of action. जब आप action or doer पे importance नहीं देना चाह रहे and you are giving on the importance on the target, जब target पे आप importance देना चाह रहे हैं, so you can start like insulin was discovered. So main target is insulin, but who did it? We are not interested in it. Like Ali was given the key yesterday. Okay. Ali was given a key yesterday. Who gave the key? We are not interested. We are talking about the who is being targeted. The target कौन किया जा रहा है? That is one of the most important thing rather than who's doing that. And what is the target? I mean, say here the subject is receiving an action. In passive voice, subject is receiving an action. Subject is not doing an action like a target. The target is receiving an action. Junaid is needed at the front desk. He is the only person who can
translate from Arabic English for customer who is here now. These vegetable will be steamed, not fried. है ना? मैं बोलता हूँ ना, ये vegetable steam की जाएंगी, fried नहीं की जाएंगी. The boxes were moved. Box move किए गए थे. But who did it? We don't know, and we are not interested because we are not giving any importance to the doer of an action. That is why we are giving a importance to the target and object. What is our object and target? We are writing a second scientific generic traditionally relieves on the passive voice. Passive voice is often preferred in the lab reports and the scientific research, most notably in the materials and the method of action. अच्छा, पैसिव वॉइस को हम लोग यूज करते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, जिसमें हमें ये इंटरेस्टेड नहीं होता कि कौन कर रहा है, क्या काम हो रहा है. वी आर इंटरेस्टेड इन दैट. जो लैब रिपोर्ट है, साइंटिफिक रिपोर्ट है. लाइक आई सेड, सोडियम हाइड्रोक्साइड was discovered in water. Who discovered it? It's not necessary. The solution was then titrated with the hydraulic acid. Okay, these are the scientific language. They are also used in the passive voice. When the speaker or the listener sure who the doer of an action is, अगर हमें पता है कि doer of an action कौन है, already if you know about it, so we can also use the passive voice. Like our English class is not conducted properly. You know, student to principal, you know who is doing that. If you know the doer of an action, so you do not want to mention it. Lecture is not delivered properly. Assignments are not checked on daily basis. Okay, daily. Lectures are not delivered properly. You are talking to the principal. You said lectures are not delivered properly. Basically, here the target and the doer of an action is not necessary because it is already known. Because you are talking to the principal as a student, so it's already assignments are not checked daily. Assignment रोजाना check नहीं किए जाते. So sometime the doer of an action is understood and you already know who is the doer of an action. That is why we are not mentioning it. So we are focusing the target and the object. Okay. Like slang language is used in the classroom. Sometimes students are insulted. Like you are talking to the principal. So what you are doing? You are mentioning the doer of an action. You're not mentioning the doer of an action here. You are mentioning the receiver of an action, who's receiving an action. That is more important rather than who's doing that. When should I avoid passive voice? That is a very important. Passive voice can get into the trouble in academic writing because they can give you the vague about who is responsible for the action. Academic writing often focus on the difference between the idea of different researchers and between your own ideas of those researchers who are discussing. Too many passive voice can create a confusion. Like research has been made to discredit this theory. Who did it? Research, you, professor, authority. Who did it? We don't know. That is why it's a little bit confusion. So that is why we are focusing who is doing that. We are not focusing on that. What is being done? We are focusing passive voice for that. Like some students use passive voice sentence to hide the research. Like telephone was invented in 19th century. I couldn't find out who invented the who invented the phone or who invented the phone. Basically, the telephone was invented in the 19th century. Who did it and who was the agent? We don't know, and we don't want to know as well. Finally, the passive voice often sound wordy and indirect. They can make the reader work unnecessarily hard any since then usually longer than an active sentence. Passive sentence take up the precious room in the paper. Because whenever we want to save the space, we are using passive voice because we are hiding the doer of an action and we are directly focusing on the target and the object. Okay. Since the car was being driven, Michael, at the time of the accident, the damage should be paid for him by him. This is also the passive voice. So we are not mentioning who's the doer of an action. When we change the active into passive sentence, that is very important. Object of an action become the subject of the passive in a sentence. For instance, identify an object of the following sentence. Like Ali called, let me, okay, I called Ali in the morning to discuss an important issue. He went to school by a car yesterday. Intransitive verb. People buy a lot of book in the magazine from the stand.
Ali always helps Sarah to do her homework. My sister is cooking the macaroni in the kitchen. So these type of, remember this, we can make a passive voice from to the transitive verb, not the intransitive verb. The verb which are taking object, these are called transitive verb. The verb which are taking no object, they are called intransitive verb. So we cannot make the passive voice of the intransitive verb. We always make the passive voice of the transitive verb. This is the basic idea yesterday I gave you. Passive auxiliary is be always used according to the tenses and situation. Past participle plus third form of the verb, passive verb, and this is the basic structure. Yesterday, I gave you be plus third form be written, is am being written, was written, will be written, have or has or had been written, is am was, were, and being written. Like I read a letter is written. I'm writing a letter is being written. I've written a letter has been written. I wrote a letter was written. Sonia writes a letter is written by Sonia. Okay. Yesterday I taught you like that. By the agent uses 15% in the only passive. Yesterday I told you we are not usually using the passive voice. Only the 15% passive voice we are using whenever we are mentioning the doer of an action, the who is doing the action. Okay. So remember this, whenever we are using the doer of an action, it is only the 15% of the passive voice. Otherwise, in the passive voice, we are not mentioning the doer of an action. Otherwise, there is no use of using the passive voice because we are always using doer of an action. We can use the active voice if you want to mention the doer of an action. I teach English online. English is taught by online by me, by him, by her, by you, and by it, by someone, by somebody, by nobody, by everybody. Okay. He gives me money. You are giving money by him. SHO Faraz arrested Salim Kala. Salim Kala was arrested by SHO Faraz 15%. Passive voice with tenses. Okay. Passive voice with modal verb. You can use passive voice with the modal verb like a should, can, could, may, might, all of the passive verbs. And infinitive passive, you can also use used to. Yesterday I taught you like I used to, had to, manage to, dare to. You can use with the semi models as well. Here are some of the sentences you can take a look. Like Sarah calls me on Sunday. I am called on Sunday. See, these are the active and passive voice over here. Teachers don't punish Salman. Salman is not punished. Does Sir Hasib appreciate a student? Are student appreciated? We can make a question as well. Remember this. Active in the present progressive, as you can see. Yesterday I taught you all this tense wise. I am helping Junaid. Junaid is being helped. Or we are not writing letters. Letters are not being written. Is she watering the flower? Are the flowers being watered? Yesterday I taught you all tenses, modals, semi-modals. Yesterday I told you all of these type of things. Okay, but okay, I'll revise. I'll read them as well. Sarah has paid the bill. The bill has been paid. They may not have caught. They have caught the thieves. The thieves have not been caught. Have you? Have they noticed us? They have. Have you been noticed? Okay, these type of in the past as well. Like I said, we stopped the bus and the bus was stopped. Somebody didn't invite and we were not invited. Did she sing the song? Was a song sung? Okay, the past continuous. I was writing a letter to all. A letter was written. Okay. Passive with the model as well, like a will. I said Hina will invite Ali to the party. Ali will be invited to the party. Hina won't invite Salman to the party. Salman won't be invited to the party. And the can and could as well. Maria can foretell the future. The future can be foretold. Tina can drew this picture. This picture cannot be drawn or cannot be drawn. Or may or might you can use, should you can use, out to, had better, all you can use it. Oh, yesterday I forgot the had better. Okay, no problem. Okay, her company may give Sana a new office.
Asana may be given a new office. The lazy student may not do the homework, or the homework may not be done. May and might, you can use her company might give Asana a new office. Asana may be given a new office. The lazy students might not do the homework, or the homework might not be done. Should, you can use students should memorize English vocab words, or English words should be memorized. Children shouldn't smoke cigarette, or smoke cigarettes should not be smoked. Okay, these type of words. Active as well. Students should student out to learn English words, or English verbs out to be memorized. Okay, you can use had better. Student had better practice English every day, and English had better be practiced every day. Children had better not drink whiskey, and whiskey had not better be drunk. And this is also, you can see active of it should have plus the past. Whenever you are talking about the past, you can use student should not have. Let me see. Okay. Let me zoom it a little bit so I can read it. Students should have learned the verbs, or the verb should have been learned. The children should have broken the window. They shouldn't have broken the window, or the window shouldn't have been broken. Okay. Maybe I'm reading this sentences is I find it a little boring for all of you. So Yes, let's sir. start. Very good. Yeah. I think because that is the has been given by the Sarasit. He asked me to do that as well. Okay. Okay. Let's start by my own way rather than doing that. Okay. Passive voice. Remember this passive voice. Why we are using? Okay. In a passive voice, we are using double verb as well, or the double object. Sometime we are using passive voice with a stative passive voice. Passive voice can be stative. Like I said, the window is broken. This is called the stative passive voice. Or I said window is broken by the children. The window was broken by the children. That is called the action passive voice, and they are called the stative passive voice. Okay. You can make a negative sentence as well. Like I said, money hasn't been paid. Money hasn't been paid yet. Okay. Let me share the screen, so I'll start writing for you. You may learn more if I share the screen. Yesterday I taught you. Let me share the screen. Okay. Yesterday we did it, and had better was remaining, so I better had the had better as well. English had better be taught. Better English पढ़ाई जाए ना. I forgot to mention had better, so that's why I'm adding. English had better be taught. Okay. That is present. English had better be taught. बेहतर है English पढ़ाई जाए, and you can also make it a negative, present negative, and the past. There is no past of had better. सर ये जो एक्टिव वॉइस होता है ये प्रेजेंट सिंपल में होता है और पैसिव वॉइस को हमने फिर पास्ट में करना होता है. नहीं. Who said you? अगर एक्टिव वॉइस भी प्रेजेंट में है तो पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट में हो सकता है. लाइक आई टीच इंग्लिश और इंग्लिश इज टॉट, दोनों प्रेजेंट में. वर्ब का फर्क है ना. ऊपर देखें मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, सी ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन. टारगेट प्लस टेंसेस मॉडल सेमी मॉडल प्लस बी प्लस एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बी की मैंने चारों फॉर्म्स भी लिखी हुई है, इज एम आर वॉज वर बीन और बीइंग. ये है पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस ये थोड़ी होता कि आप उसको प्रेजेंट में है तो पास्ट में करें. अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट में है तो पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट में ही होगा. यू नीड टू रिमेंबर दैट इफ द एक्टिव वॉइस इन प्रेजेंट, then you have to convert the passive voice into the present. अगर active voice भी past में है तो passive voice भी past में होगा. Yes, sir. This is the formula. You can note. Okay, sir. Note the Thank you. formula. अच्छा, active voice and passive voice can be in a question as well.
अच्छा, हम जरूरी नहीं है कि हम एक्टिव वॉइस से क्वेश्चन बनाएं, वी कैन मेक अ क्वेश्चन इन द पैसिव वॉइस एज वेल। लाइक आई सेड, इज इंग्लिश टॉट? क्या इंग्लिश पढ़ाई जाती है? एंड वी कैन यूज द हैड बेटर नेगेटिव, आई थिंक। आई सेड Urdu, I'm writing another one. Urdu had better, Urdu had better not be spoken. बेहतर है उर्दू ना बोली जाए। Okay. Urdu had better not be spoken. बेहतर है उर्दू ना बोली जाए। This is also a present in negative. This is also a present. Okay. So you need to know what, कि हम तमाम टेंसेस में, तमाम मॉडल वर्ब्स में हम वी कैन यूज पैसिव वॉइस को हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, पैसिव वॉइस को हम पॉजिटिव में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ मुझसे इंग्लिश बुलवाई गई, तो क्या बोलेगा? इंग्लिश इज मेड टू स्पीक, है ना। मैं बोलता हूँ इंग्लिश बुलवाई जाती है, तो दिस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव। आई सेड इंग्लिश इज मेड टू स्पीक, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव। या इंग्लिश इज मेड टू टीच, इंग्लिश पढ़वाई जाती है, ये इंग्लिश इज मेड टू टीच, इंग्लिश इज मेड टू टीच, दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव वर्ब। जिसमें काम कोई और करता है, यू आर नॉट परफॉर्मिंग द एक्शन। दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव इन प्रेजेंट। यानी इंग्लिश, हम काम जब किसी और से करवाएं, जब हम काम किसी और से करवाएं तो हम क्या करेंगे? वी आर यूजिंग पॉजिटिव, रिमेंबर दिस। सही जी। अब मॉडल को हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, मॉडल को हम पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, जुमले को हम क्वेश्चन में भी ला सकते हैं, है ना। लाइक आई सेड, लाइक आई एम राइटिंग, इज इंग्लिश टॉट? इज इंग्लिश टॉट? क्या इंग्लिश पढ़ाई जाती है? ओके, इज इंग्लिश टॉट, या इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन यूज, इज इंग्लिश लैंग्वेज taught in your school? This is the question. पैसिव वॉइस को हम सवाल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये मत समझिएगा कि वी कैन यूज द पैसिव वॉइस इन अ क्वेश्चन एज वेल, है ना। इसी को अगर पास्ट करना है, इसी को आपने कंटिन्यूस करना है, अभी इसी क्वेश्चन को अगर आपने सर ये कंटिन्यूस आपने करना पॉजिटिव क्या लिखा है, इसके मीनिंग्स है, क्या है? पॉजिटिव का मतलब है ऐसा काम जो आप दूसरों से करवाते हैं, खुद नहीं करते। दिस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव। इज इंग्लिश Okay, मेड टू टीच? क्या इंग्लिश पढ़वाई जाती है? यानी आप खुद नहीं कर रही, किसी और से करवा रही हैं। सही जी। दिस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है वो काम जो हम खुद नहीं करते, किसी और से करवाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव। उसके भी पैसिव वॉइस बन सकता है। इज इंग्लिश टॉट इन योर स्कूल? अच्छा, इसी को अगर पास्ट करना हो तो कैसे करेंगे हम? या मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ, आई विल मेक इट शॉर्ट। इज इज इंग्लिश लैंग्वेज टॉट? अब इसी को अगर मुझे पास्ट करना है तो मैं क्या करूँ? अगर Was मुझे English हाँ, English language taught? अच्छा, अगर इसी को मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूस करना है तो मैं क्या करूँ? English language Is taught. English be taught? Is English being was English being? English और language शॉर्ट being कर लेते taught? हैं। Being taught. हाँ, इज इंग्लिश Being टॉट, taught. ये प्रेजेंट हो गया। इज इंग्लिश, जी. Being taught. वेरी Being गुड। taught. इज इंग्लिश बीइंग टॉट?
How can we convert into the perfect? Has English being being English taught? being taught. Has English being taught? As English. Has English been taught? Very good. The basic structure, if you know, you can make a passive voice. Is not that difficult. The basic, if you know, you can make it. Past simple. How can you make a past simple? Was English Was English language taught? Was English taught? Good. It's mean you got the idea yesterday, whatever I taught you. Okay. Past continuous. Was English being Was taught? English taught? Being taught. Was English being taught? Okay. Past perfect. Had English being taught? Had English being English taught? being taught. Very nice. It's mean you got the idea. What is passive voice? But Very sir, nice. how can we make it past perfect progressive? No, we cannot make it past perfect, present perfect progressive, past perfect progressive, future continuous, future perfect continuous. You cannot make the passive voice. उन tenses में हम नहीं बनाते, 4 में नहीं बनाते, 8 में हम बना सकते हैं. It's not allowed. Yes, sir. G. Future simple. Who can tell me? Future simple. Will English be taught? Will English be taught? Be taught. Will English be taught? Ready? Okay, that's good. Future perfect. Will English have? had taught? Had been taught? English Will have Have been taught. be taught. have been taught. Yes. Yes, sir. Have been taught. Okay, now the future perfect we have done. And now modal verb like a should. Should English be taught? Should English be taught? Okay, did you have you already learned the passive voice, or this is the first time you're learning? I don't know. Yes, sir. This Everyone is the discuss- first time. First time. Oh, that's why. I thought you had already learned. No, sir. Little No, I sir. thought- Yesterday we cleared thought- that how we learned, how we taught. Okay, okay. Yeah, I told you the basic formula. Na? If you know the basic formula, then you can make it. Sir. Yes, sir. Okay, in the used to, how can you make in a used to? Question. Like I said, क्या English पढ़ाई जाती थी? Is English used to? No, Used to sorry. be taught. We use did. Did. Did English? Oh yes. English Second form. Yeah. Did English Did English used to? used to be taught? to taught. Used to taught. Used to be taught. Yes. Yeah. Did English used to be taught? Or like a need? Like I said, Yeah. क्या English पढ़ाई जाने की जरूरत है? Needed. Does English Does English need to be taught? Need to be taught. Yeah. Does English need to be Taught. taught? It's mean you got the idea now. What is passive voice? Very good. अभी मैं आपको ना इंशाल्लाह today I will explain you some of the things. Then I will try to teach gerund passive, infinitive passive, reporting passive, get with passive. I will teach you first. I'll clear your this double object passive. Okay, does English need to be taught? And use dare. Dare. Sir, B is missing. Oh, sorry. Need
to be. Yeah, without be it's not possible. You cannot make passive voice. Yes, sir. Yes. Okay, make a past of should in question. Should Should English have been taught? have been. Yeah. Should English Have been been Was taught. taught. Have been taught. No, have been taught. was नहीं आ सकता स्टेट मॉडल वर्ब्स में. We cannot use the Yes. was. Should Yes, English sir. Have been should taught. English have been taught? Been taught. क्या इंग्लिश पढ़ाई जाना चाहिए थी? Okay, very good. Okay, there. Does English dare to Does English dare to be taught? be taught? It's mean you have revised. Does English Dare dare to be taught. To be taught. dare to be taught? Okay, must. Does English must to be taught? Must to be taught. Does- yes. Must English be taught? Must be. Must English be taught? Yes, sir. Must English. Okay. Okay. Must English. Question. We cannot okay, use sir. does with a modal verb. Oh, okay, sir. Yes, yes. Must English be taught? Taught. Yes. Need. Okay, now let's move any further. Sometime we are using preposition as well with the passive voice. Like I said, the building was knocked down last year. Knock down is a preposition. Sometime we are using prepositional verb in passive voice. I'll write prepositional verb in passive voice. I'm writing prepositional verbs in passive voice. Maybe this is more better than reading, I think. Yes, What do you sir. think? Yes, sir. I think it's more better. It's more better than reading. Yes, Because I was it's reading, better. I found it boring for myself Yeah, as well. exactly. While I was reading, I think I should write and explain. It's good for you. Prepositional verb in passive voice. अच्छा, कभी कभार कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो preposition के साथ आते हैं, उनको भी आप passive voice में इस्तेमाल कर सकती हैं. जैसे मैं बोलता हूँ, has the doctor been sent for? क्या डॉक्टर भेजा जा चुका है? और मैं बोलता हूँ, the building was knocked down last year. पिछले साल बिल्डिंग गिरा दी गई थी. I'm writing. The building was knocked down का मतलब है मार के गिरा देना. The building was knocked down is a preposition. The building was knocked down last year. पिछले साल बिल्डिंग को मार के गिरा दिया गया था. Okay. Prepositional verb in passive voice. कुछ ऐसे भी prepositional verb हैं जो preposition के साथ आते हैं, वो भी आप passive voice में use कर सकते हैं. You can use the prepositional verb in the passive voice as well. Like I said, has the doctor been sent? Has the doctor been sent? क्या डॉक्टर भेज दिया गया है? फॉर किसी चीज के लिए? हैज भी देखें, सेंड क्या जो फॉर आ रहा है, इट्स अ preposition. अच्छा, कुछ ऐसे भी preposition होते हैं जिनके आगे पैसिव वॉइस चलता है. जैसे मैं बोलता हूँ, आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग रॉब्ड. मैं डरता हूं लूटने से. तो कुछ preposition भी ऐसे हैं जिनके साथ पैसिव वॉइस चलता है ना? तो preposition के आगे भी पैसिव वॉइस आ सकता है, लेकिन preposition के आगे जो पैसिव वॉइस आएगा वो बी की शक्ल में नहीं आएगा, वो बीइंग की शक्ल में आएगा. क्योंकि preposition के आगे जब भी वर्ब आता है तो वो हमेशा ing की शक्ल में आता है. आप लोगों को पता है, नहीं पता, मुझे नहीं पता. आई डोंट नो वेदर यू नो अबाउट इट और नॉट. कि preposition के आगे जब भी हम वर्ब लगाते हैं
तो वो हम आईएनजी फॉर्म में लगाते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, तो जो इन प्रेपोजिशन है उसके आगे जब हम वर्ब लगाते हैं तो वो हमेशा जेरेंड की शक्ल में आता है। डू यू नो, आपको पता है ये बात? No, sir. नो No, सर sir. जब भी अगर कोई जुमला Sir, what is प्रेपोजिशन, gerund? जेरेंड का मतलब है वो वर्ब जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ आए और जिसमें हेल्पिंग वर्ब ना हो, उसको हम इंग्लिश में जेरेंड कहते हैं। जेरेंड नहीं पढ़ा हुआ आपने, तो मैं जेरेंड के साथ पैसिव वॉइस कैसे पढ़ाऊंगा आपको? हाउ कैन आई टीच देम? No, sir. इन्फिनेटिव पढ़ा हुआ है आपने? हैव यू लर्नड इन्फिनेटिव? नो सर इन्फिनेटिव भी नहीं पढ़ा हुआ? तो No. डायरेक्ट इन्फिनेटिव पहले पढ़ाना पड़ जाएगा मुझे। ने बताया था मैं आपको सिंपल फॉर्म में बता देता हूँ। जेरेंड इंग्लिश में उस वर्ब को कहते हैं जिसके अंदर आईएनजी हो बगैर हेल्पिंग वर्ब के। हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करें, जैसे आई एम गोइंग, तो ये जेरेंड नहीं है क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। ऐसा लफ्ज जिसके आगे आईएनजी फॉर्म आए और जिसमें हेल्पिंग वर्ब ना हो, उसको हम इंग्लिश में जेरेंड कहते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ आई लाइक प्लेइंग, तो देख लें अब लाइक के आगे एक और वर्ब आ रहा है प्लेइंग, तो ये क्या है? इसको इंग्लिश में जेरेंड कहते हैं। वर्ब के आगे भी वर्ब आते हैं, वर्ब प्लस वर्ब आपने पढ़े? नो सर नो वर्ब प्लस वर्ब, I want अच्छा वर्ब प्लस वर्ब फॉर्म भी होते हैं इंग्लिश में। ऐसा होता है कि यूजुअली हम वर्ब के आगे वर्ब नहीं लगाते, है ना। जैसे मैं बोलता हूँ गो, तो गो के आगे हम दोबारा वर्ब नहीं लगा सकते। लेकिन इंग्लिश में कभी कभार ऐसे भी होता है, कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनके आगे एक और वर्ब आ जाते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, अब देखें लाइक के आगे एक और वर्ब आ गया। जब वर्ब के आगे वर्ब आता है, या तो हम उसको इन्फिनेटिव कहते हैं या हम उनको जेरेंड कहते हैं। अगर वो आईएनजी की शक्ल में आ रहे हैं तो हम उनको जेरेंड कहते हैं, अगर वो टू की शक्ल में आ रहे हैं तो हम उनको इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ आई वॉन्ट टू गो, तो टू गो क्या है? ये टू गो इन्फिनेटिव कहलाता है। अब मुझे लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा टॉपिक सेटना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रेप, इसमें भी प्रेपोजिशन के आगे भी पैसिव वॉइस आएंगे और जेरेंड के आगे भी पैसिव वॉइस आएंगे। अब वो मुझे पढ़ाने के लिए थोड़ा सा आपकी बेस बनानी पड़ेगी, लेकिन हमारे पास टाइम इतना है नहीं, दैट इज द प्रॉब्लम। Sir, वी नीड give a टाइम। brief description. Sir, please, you should teach for us. सही है। अच्छा मैं आपको एक जुमला लिख देता हूँ आसानी के लिए, देखें। इंग्लिश में कुछ वर्ब, इंग्लिश में वर्ब प्लस वर्ब भी होते हैं ना, वी नीड टू गो वर्ब प्लस वर्ब, यानी वर्ब के आगे भी वर्ब आ जाते हैं। उमूमन ऐसा नहीं होता, हम वर्ब के आगे वर्ब नहीं लगाते, लेकिन ऐसा भी होता है कि वर्ब के आगे एक और वर्ब आ जाता है, यानी मेन वर्ब के आगे। ये मेन वर्ब है, इसके आगे एक और वर्ब आ जाता है। बेसिकली वो मेन वर्ब नहीं होते, वो सपोर्टिंग वर्ब होते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ आई वॉन्ट टू गो, देख लें एक और वर्ब आ गया। मेन वर्ब क्या है? वॉन्ट। आई वॉन्ट टू गो, है ना। अब टू गो क्या है? जो टू गो है इसको इंग्लिश में इन्फिनेटिव कहते हैं। जिसके आगे टू लगा है और गो लगा है, इसको इंग्लिश में इन्फिनेटिव कहते हैं। इसका नाम है इन्फिनेटिव वर्ब, है ना। आई वॉन्ट, वॉन्ट मेन वर्ब है और जो टू गो लगा है ये इन्फिनेटिव है। ओके, दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। लेकिन अगर मैं एक वर्ब के आगे आईएनजी लगा दूं तो उसको इंग्लिश में हम जेरेंड कहते हैं। अब टू गो, मैं इज इक्वल टू का नाम निशान बना देता हूँ, टू गो इज इक्वल टू इन्फिनेटिव, ये रहा, ये इन्फिनेटिव कहलाता है। अगर मैं इन्फिनेटिव बोलूं तो आप समझ जाएं, इसका मतलब है वर्ब के साथ टू की फॉर्म हो तो उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। और मैं अगर बोलता हूँ आई लाइक प्लेइंग, तो ये जेरेंड है, मुझे खेलना पसंद है। शॉर्ट में करके बता रहा हूँ, उससे तो बहुत बड़े हैं ये, पूरे अलग अलग टॉपिक्स है ना, दे आर वेरी बिग टॉपिक। के लिए अलग टाइम चाहिए, अलग क्लास चाहिए। आप लोग बोर होके भाग ना जाए ना, मसला ये भी तो है, इंग्लिश की तो इतनी डिटेल है। No, sir. No, तो sir. बोर हो जाएंगे, फिर सर पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, इतनी डिटेल में चले गए। सही है This जी। is better for us. सर हाँ जी, सर ये चीजें बेसिक हैं और इसके बिना हम कंप्लीट नहीं सीख पाएंगे इसे पैसिव को, कंडीशनल्स को, मतलब जो
मेन चीज है, हमें पता ही नहीं है इन्फिनेटिव क्या है, हमें पता ही नहीं है जीरेंट क्या है, ये चीजें तो मेन है। एंड आई चले थिंक मैं आपको हमें बता देता हूँ। इस मंथ के बाद आगे ये सब चीजें एक और महीना पढ़नी चाहिए, और हमें और एक महीना भाई स्टेज में रहना चाहिए। मैंने तो आपसे कहा है, मेरे पास पढ़ाने को बहुत है, आप पढ़ने वाले बने बस। सर हमें पढ़ना है, हाँ, हमने अपने हाँ 3 पढ़ने वाले महीने बने, दिए देन हैं, आई हैव हम गॉट अ लॉट ऑफ और थिंग टू 3 दे टीच। देंगे। Yes. सर हम अपने और 3 दे देंगे, और हमें तो पढ़ना है। आप सर से बात कर रहे हैं। 2-3 months it's better आप जो because है, आप सर हसीब से बोलें, सर हसीब मुझसे बोलेंगे तो मैं बना लूंगा क्लास, पढ़ा दूंगा, मेरा क्या, मेरे पास तो बहुत नॉलेज है, बहुत ओके चीजें हैं मेरे सर, पास तो। मैं आपको जेरेंड और मेरा तो इन्फिनेटिव मन है। के पूरे अलग अलग टॉपिक करा दूंगा, पूरे पूरे अलग अलग। देखिए जेरेंड एक अलग वर्ब है, इन्फिनेटिव एक अलग वर्ब है, इनकी पूरी एक्सरसाइज है। भाई जेरेंड सब्जेक्ट भी यस बन जाता है, ऑब्जेक्ट भी बन जाता है, कॉम्प्लीमेंट भी बन जाता है। अभी सब पढ़ाना पड़ेगा ना तरीके से, फिर आपको समझ आएगा ये So किस तरह यूज होते हैं। actually, the problem is that mostly students are new and old are merged in this batch, so we हाँ, don't दैट इज understand. द रीजन। Sir, I'm new here and it's my first month. ओह, I इट्स योर फर्स्ट started मंथ, मे with बी इट्स डिफिकल्ट support, फॉर so यू। yes, या sir, आई कैन I अंडरस्टैंड। can't understand anything. अच्छा, अभी तो मुझे थोड़ा टॉपिक से हटना पड़ रहा है, मैं थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ स्लाइटली ना, फिर मैं वापस But पैसिव we वॉइस पे आ जाऊंगा। अच्छा, मेन वर्ब के आगे अगर एक और वर्ब आता है तो उसको या तो हम इन्फिनेटिव कहते हैं या जेरेंड कहते हैं। अगर वो टू की शक्ल में है तो हम उसको इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। अगर वो आईएनजी की शक्ल में है मेन वर्ब के आगे तो हम उसको इंग्लिश में जेरेंड कहते हैं। मैंने लिख दिया है, देखें, आई वॉन्ट टू गो के आगे मैंने इजिकल टू लगा के इन्फिनेटिव लिख दिया। आई लाइक प्लेइंग, मेन वर्ब के आगे एक और वर्ब आ रहा है तो वो आईएनजी की शक्ल में है तो उसको हम इंग्लिश में जेरेंड कहते हैं। जैसे मैं एक और जुमला लिख देता हूँ, मैं बोलता हूँ आई प्लान, ये ले, मैं पास में लिख देता हूँ, आई प्लान टू लर्न इंग्लिश, ये ले, एक और इन्फिनेटिव लिख दिया मैंने इंग्लिश सीखने का प्लान किया था, ये ले, ये भी इन्फिनेटिव वर्ब है क्योंकि टू आ रहा है साथ में मेन वर्ब के आगे। मैं वापस टॉपिक पे चले जाता हूँ, वरना सर अस्सी बोलेंगे सर जावेद टॉपिक से हट रहे हैं। मैं वापस टॉपिक पे चले जाता हूँ, बस मैं थोड़ा सा ये लिख दूँ। और इसी तरह मैं जेरेंड को पास में कर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ आई स्टॉप टॉकिंग, या मैं बोलता हूँ आई स्टॉप टीचिंग इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ाना बंद कर दी थी। ये जेरेंड है, देख लें स्टॉप के आगे आईएनजी वर्ब आ रहा है, इसको हम इंग्लिश में जेरेंड कहते हैं। अब जेरेंड सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, उसका एक अपना पूरा अलग टॉपिक है जेरेंड ना, पूरा एक अलग टॉपिक है। आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह बाद में जेरेंड को, इन्फिनेटिव को। तो अभी तो मैं फिर आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि वर्ब के आगे वर्ब भी आ सकता है ना। देखें टाइम इज गोइंग टू क्विक, टाइम बहुत तेज जा रहा है। तो इसी इन्फिनेटिव और जेरेंड को हम पैसिव वाइज में भी यूज कर सकते हैं। और इंग्लिश में याद रखें, जब भी प्रेपोजिशन आता है तो उसके आगे हमेशा जेरेंड आता है। मैं लिख देता हूँ, जब भी प्रेपोजिशन आएगा तो उसके आगे हमेशा जेरेंड आएगा, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट करें कोई प्रेपोजिशन आ गया, तो उसके आगे आप हमेशा जेरेंड लगा दें। मैं एक जुमला भी लिख देता हूँ, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? no, sir. No, sir. Sir, Sir, we are learning. सही है। जब भी इंग्लिश में प्रेपोजिशन आ जाए तो उसके आगे या तो नाउन आता है या जेरेंड आता है, आपकी मर्जी है। जैसे मैं नाउन भी लिख देता हूँ, जब भी इंग्लिश में प्रेपोजिशन आपको मिल जाए तो या तो उसके आखिर में आप नाउन लगा सकते हैं या जेरेंड लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। जैसे मैं एक जुमला लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ आई एम गुड एट, अब एट जो है वो प्रेपोजिशन है, अब इसके आगे मैं नाउन भी लगा सकता हूँ, मैं जेरेंड भी लगा सकता हूँ, मेरी मर्जी। मैं बोलता हूँ आई एम गुड एट इंग्लिश, मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ। सही है, तो मैंने क्या करा, मैंने नाउन लगा दिया। सही है जी। मैं चाहूँ तो जेरेंड भी लगा सकता हूँ, वो भी लगा के दिखाता हूँ आपको। तो मैं बोलता हूँ आई एम
I am good at speaking English. हाँ, आई एम गुड एट टीचिंग इंग्लिश कर लें, जेरेंड लगा लेता हूँ, ये ले, ये देखें। Teaching of English. हाँ। Yes. बिल्कुल जेरेंड आ गया, शॉर्ट करके पढ़ा रहा हूँ। मुझे जेरेंड सीखने में 1 साल लग गया था, 1 साल बाद मुझे जेरेंड समझ आया था होता क्या है। ना हम लोग हाँ, समझ ही नहीं आ रहा था, को पढ़ाने वाला ही नहीं मिला प्रॉपर। आई कुडंट फाइंड एनीवन टू टीच मी प्रॉपर्ली। सही जी, आई एम गुड एट टीचिंग, ये जेरेंड है। जब भी आपको प्रेपोजिशन मिल जाए तो उसके आगे या तो आप नाउन देंगे, या अगर आपने वर्ब देना है तो हमेशा हम आईएनजी की शक्ल में देंगे। आप फर्स्ट फॉर्म नहीं दे सकते प्रेपोजिशन के आगे, चाहे इन हो, चाहे ऑन हो, चाहे एट हो, चाहे अंडर हो, चाहे ऑफ हो। अच्छा, अगर इसी को पैसिवाइज बनाना चाहूं तो फिर क्या करूं? पैसिवाइज का फार्मूला मैंने क्या बताया था? बी के आगे थर्ड फॉर्म। अब देखें, मैं इसी जुमले को पैसिव में कन्वर्ट कर देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक जुमला लिखता हूं, आई एम अफ्रेड। देखिए मैं जुमला लिखता हूं। अच्छा, एक चीज और, आगे बढ़ने से पहले, जरूरी नहीं है कि पैसिव वॉइस हमेशा बेजान चीज के लिए आए। इंसान भी टारगेट हो सकता है, इंसान भी टारगेट हो सकता है। फर्ज करें मैंने टारगेट लिखा है ना, फार्मूला बेसिक टारगेट, फार्मूला लिख रहा हूँ, टारगेट लिखा मैंने, यानी ऑब्जेक्ट। हम बात किसकी कर रहे हैं? प्लस हमने वो सारी टेंसेस, मॉडल्स और सेमी मॉडल्स लिए, उसके आगे बी लिया, और उसके आगे पास्ट पार्टिसिपल यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बेसिक फार्मूला है पैसिव वॉइस का। अब टारगेट जो है वो ह्यूमन भी हो सकता है और लाइफलेस भी हो सकता है। टारगेट मैं भी हो सकता हूँ, यानी जानदार चीज भी और बेजान भी। फर्स्ट करें मैं अपने आप को टारगेट करता हूँ, मैं बोलता हूँ आई, और मैंने बी की जगह एम ले लिया, मैं बोलता हूँ आई एम पेड मंथली। अब मैंने क्या करा इसमें, बताएं आप? सर मैंने फॉर्म अपने यूज आप को किया टारगेट बना सर। लिया। यस सर। आई एम पेड, मुझे पैसे दिए जाते हैं हर महीने। कौन दे रहा है मुझे नहीं पता, और मैं बताना नहीं चाहता आपको। आई एम हाइडिंग, मैं छुपा रहा हूँ। दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हम क्यों लगाते हैं? कि हम काम करने वाले को छुपा रहे हैं या बताना नहीं चाह रहे। दैट इज द वन रीजन। मैं टारगेट की बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। एक्शन किस पे हो रहा है? मुझ पे हो रहा है। सो आई एम द टारगेट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम पेड मंथली, मुझे हर महीने पैसे दिए जाते हैं, है ना? यस। आप बोलती हैं सर हमें पढ़ाया जा रहा है, तो क्या होगा? वी वी आर आर बीइंग टॉट, टॉट। या वी आर बीइंग टॉट इंग्लिश, हमें इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। ये ले, तो आप ये मत समझिएगा कि पैसिव वॉइस में टारगेट जो है वो बेजान चीज होती है, जानदार भी हो सकती है। आप भी टारगेट हो सकते हैं, और कोई चीज भी टारगेट हो सकती है, चाहे वो कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो, चेयर हो, आप हो, है ना? मैं बोलता हूँ थीफ हो, है ना? मैं बोलता हूँ थीफ वॉज कॉट, मैं तो चोर को पकड़ लिया गया था। ये ले, थीफ वॉज कॉट यस्टरडे। ये ले, किसने पकड़ा हमें नहीं पता, और हम बताना नहीं चाह रहे। थीफ वॉज कॉट, या रॉबर्स कर लें, थीफ या रॉबर। ये ले, नाउन चेंज कर लें। अरे मैं तो आपकी क्लास लेके फंस गया हूँ। मैं अब इतने से टाइम में क्या क्या पढ़ाऊँ आपको, मैं तो ये सोच रहा हूँ। टाइम ही इतना सा है, व्हाट कैन आई टीच? अब वो बहुत सारी चीजें कवर पढ़ानी पड़ेंगी इसमें, तो जेरेंड नहीं पता, इन्फिनेटिव नहीं पता। सर यू शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। You should हाँ segregate हाँ, दिस the इज व्हाट आई हैव बीन थिंकिंग ना। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड कि 4 Sir, दिन में व्हाट एल्स आई कैन डू। आई एम नॉट अ मैजिशियन, आई एम नॉट अ विजार्ड। बोलते ना, मैं यस सर। जादूगर थोड़ी हूँ। आई नीड टाइम। अब एक टॉपिक छेड़ो तो दूसरी चीजें निकल आती है ना। दिस इज व्हाट आई हैव बीन थिंकिंग कि एक के पीछे एक चीजें हैं। अब माय टीचिंग स्टाइल इज डिफरेंट। मैं अपने स्टूडेंट को बेसिक में सारी चीजें पढ़ाता हूँ, इन्फिनेटिव, जेरेंड, ईडी, एडजेक्टिव, ये वो, सब चीजें पढ़ाता हूँ। क्योंकि मैं बिफोर टेंस, मैं 1 महीना टेंस पढ़ाने से पहले लेता हूँ अपने स्टूडेंट का,
फिर उसके बाद 1 महीने के बाद टेंस में लेकर आता हूँ जी। मैं 1 महीने के बाद अपने स्टूडेंट को टेंस पे लेके आता हूँ। आई टीच बेसिक 1 मंथ ओनली, कि उसको पता चले चीजें हैं क्या, पीच एडजेक्टिव क्या है, तो एंड एडजेक्टिव क्या है, तो जेरेंड क्या है, तो इन्फिनेटिव क्या है, तो लेट किस तरह यूज होता है, तो प्रॉपर नाउन कौन से हैं, प्रॉपर नाउन कौन से हैं, है ना। फिर एम्प्टी सब्जेक्ट इंग्लिश में किस तरह यूज होते हैं, देयर क्या है, इट क्या है, उनके क्या क्या फंक्शन है, किस तरह यूज होते हैं वो, तो इम्पेरेटिव्स की कितनी ब्रांच है, इम्पेरेटिव किस तरह यूज होते हैं, फिर सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव केस, प्रोनाउन के क्या होते हैं। वैसे तो इंग्लिश इज टू बिग, इंग्लिश बहुत बड़ी है ना, इंग्लिश इज टू बिग। अगर आप 1 साल भी बैठे रहेंगे तो आप पढ़ते रहेंगे मुझसे, क्या 1 साल आई एम टॉकिंग अबाउट, इवन इफ यू गिव अ 1 ईयर आई कीप टीचिंग यू, दैट मच थिंग्स इज देयर। दैट इज ना। thief and robber was caught yesterday। असल में मैं टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना चाहता ना, दैट इज व्हाई सर हसीब विल गेट एंग्री। वो बोलेंगे सर आपको पैसे वाइज टॉपिक दिया, आप इधर उधर क्यों जा रहे हैं, लेकिन मजबूरन मुझे जाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं जेरेंड और इन्फिनेटिव में कैसे पढ़ाऊंगा पैसिव वाइज में, जब तक आपको इन्फिनेटिव और जेरेंड पता नहीं होंगे। मैं प्रेपोजिशन के साथ पैसिव वाइज कैसे पढ़ाऊंगा, जब तक आपको प्रेपोजिशन पता नहीं होंगे। Yes, sir. दैट्स व्हाई, इसलिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। ये सब आप लिख लेना, ये सब आपके लिए लिख रहा हूँ मैं। आई एम टीचिंग, आई एम राइटिंग फॉर यू। Yes, sir. You. मेन वर्ब प्लस वर्ब मैंने लिखा है, इन्फिनेटिव एंड जेरेंड। सर हम हर प्रेपोजिशन वर्ब प्लस, के साथ आईएनजी तो नहीं लगा सकते ना? जी नहीं, मखसूस वर्ब हैं। अगर आप नेट पे जाएं तो वर्ब प्लस जेरेंड की लिस्ट पूरी मिल जाएगी आपको इंटरनेट पे। वर्ब ओके प्लस सर। जेरेंड और वर्ब प्लस इन्फिनेटिव की पूरी पूरी लिस्ट मौजूद है, कि कौन से वर्ब हैं जो जेरेंड लेते हैं और कौन से वर्ब हैं जो इन्फिनेटिव लेते हैं। हर वर्ब के आगे टू नहीं लगा सकते, और हर वर्ब के आगे हम आईएनजी भी नहीं लगा सकते जी। मखसूस वर्ब ओके हैं सर। जो अपने आगे इन्फिनेटिव लेंगे, और मखसूस वर्ब हैं जो अपने आगे जेरेंड लेंगे। जैसे वांट है, देखें उसके आगे टू लग रहा है, लेकिन लाइक के आगे प्लेइंग लग रहा है। प्लान्ड के आगे देखें टू लग रहा है, लेकिन स्टॉप के आगे देखें टीचिंग लग रहा है। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से वर्ब टू लेगा, कौन सा आईएनजी लेगा? ये पूरी लिस्ट आप लिखेंगे ना, वर्ब प्लस जेरेंड, तो पूरी इंटरनेट पे गूगल पे आपको लिस्ट मिल जाएगी, और वर्ब प्लस इन्फिनेटिव की पूरी लिस्ट मिल सर जाएगी। फिर वो ये याद करना पड़ेगा ना? डेफिनेटली यू नीड टू Sir, कीप इन योर there माइंड। is. So there is Yes, help to speaking English. सही जी। अच्छा, थीफ एंड रॉबर वाज कॉट यस्टरडे। वापस टॉपिक पर आ जाता हूँ। जैसे मैं फर्ज करें, मैं प्रेपोजिशन लेके प्रेपोजिशन एक लेता हूँ और उसके साथ में पैसिव वॉइस बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे बनाऊं? मैंने लिखा है प्रेपोजिशन प्लस नाउन, लेकिन अब मैं इसी जुमले को जो है वो जेरेंड में बनाना, पैसिव वॉइस में बनाना चाह रहा हूँ, तो कैसे बनाऊं? जैसे मैं बोलता हूँ, मैं एक जुमला लिखता हूँ, आई एम, आप देखें इसी को पैसिव वॉइस से बना रहा हूँ, आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड ऑफ। अब ऑफ क्या आ गया? प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन के आगे मैं क्या लगाऊंगा? जेरेंड। तो बी का जेरेंड क्या है बताएं? बीइंग। तो being क्या करूंगा? आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग रॉब्ड। मैं लुटने से डरता हूं। ये ले, देखें बन गया पैसिव वॉइस। ये देख लें, ये कहलाता है प्रेपोजिशनल पैसिव वॉइस। क्योंकि देखें ऑफ के आगे कौन लूट रहा है हमें नहीं पता, लेकिन आप बोले आई एम अफ्रेड, मैं डरता हूं किससे? लुटने से। हाँ, यानी मैं बोलता हूं आई एम फाउंड ऑफ बीइंग प्रेज्ड, मुझे पसंद है तारीफ किए जाना। आप देखें, मैं दोबारा, ये देखें मैं एक और जुमला लिख रहा हूँ, आई एम फाउंड ऑफ, being praised फाउंड ऑफ, देखें फिर प्रेपोजिशन आ गया। अब प्रेपोजिशन के आगे मैंने बताया तो नाउन आएगा या जेरेंड आएगा। तो बी का जेरेंड क्या है? बीइंग। क्योंकि पैसिव वॉइस में बी के बगैर पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, और उसके आगे थर्ड फॉर्म लगा दें। मैं बोलता हूँ आई एम फाउंड ऑफ बीइंग प्रेज्ड, है ना, मैं बोलता हूँ मुझे पसंद है तारीफ किया जाना। देख लें, ये भी पैसिव वॉइस है। सही जी, समझ आया? यस Yes, सर। sir.
little कि bit. हम preposition कंफ्यूज है सर कुछ कुछ preposition लगा के भी आगे preposition के साथ भी आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे भी Yes, जुमले आपको मिल सकते हैं, तो आप परेशान नहीं होइएगा कि ये कौन से नए जुमले आ गए, ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहे। लेकिन ये भी पैसिव वॉइस हैं, क्योंकि बी के आगे जब भी थर्ड फॉर्म लगेगा तो वो पैसिव वॉइस होते हैं। चाहे वो बीइंग हो, चाहे वो इज एम आर हो, चाहे वो वॉज वर हो, वो सारे क्या हैं? सारे के सारे पैसिव वॉइस passive हैं। voice. Okay. बी की कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो इज एम आर हो, चाहे वो वॉज वर हो, चाहे वो बीन हो, चाहे वो बीइंग हो, उसके साथ हमेशा पैसिव वॉइस लगेगा। तो मैंने आपको इसीलिए बता दिया कि उसका जेरेंड, मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा बता दिया है जेरेंड क्या है, आईएनजी फॉर्म। और जेरेंड किसके साथ आता है? प्रेपोजिशन के आगे भी आ सकता है। और जेरेंड कहाँ आ सकता है? जेरेंड कुछ मखसूस वर्ब के साथ भी आ सकता है। ठीक है, कौन से वर्ब वो आपको नेट से निकालने पड़ेंगे, वो मैं सारे अभी लिखवाऊंगा तो सारा टाइम खत्म हो जाएगा, इसी में सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। सर लास्ट मिनट असल में मसला ये है कि पढ़ने को बहुत सारी चीजें हैं और टाइम इतना कम है। व्हाट कैन आई डू? और मुझे टाइम, इफ आई हैव अ टाइम देन आई कैन टीच यू वेल, इफ आई डोंट हैव अ टाइम हाउ कैन आई टीच यू? दैट इज द प्रॉब्लम। अभी देखें, इसमें रिपोर्टिंग पैसिव वॉइस भी है, अभी मुझे वो भी पढ़ाना है आपको। फिर टू बी और बीइंग डन, ये भी पढ़ाना है मुझे। पैसिव इन्फिनेटिव और पैसिव जेरेंड, ये भी एक ब्रांच है। फिर एक ब्रांच गेट प्लस पैसिव वॉइस है, वो भी मुझे पढ़ाना है आपको। अब मैं 2 नंबर तरीके से नहीं पढ़ाता ना, टॉपिक छोड़ दूं, अब मैं Yes, छोड़ नहीं sir. सकता कुछ। मसला ये है, ऑनेस्टी मैटर्स। Yes, sir. ऑनेस्टी First की वर्थ होती priority. है, लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी इज एवरीथिंग Yes, व्हेन sir. यू आर लॉयल एंड ऑनेस्ट। सही जी। Yes, sir. Yes, sir. Great, sir. हाँ, Sir, does English dare to be taught? What is the meaning in Urdu? क्या इंग्लिश पढ़ाए जाने की हिम्मत की जाए, इस तरह बनेगा, की जाए. की जाए। उर्दू किसी तरह बनती है। अच्छा, इंग्लिश और भी तरह से हम, अच्छा कुछ इंग्लिश में अंदर ऐसे भी जुमले हैं जो एक्टिव और पैसिव सेम हो जाते हैं। मैं बताऊं, देयर आर लेटर टू राइट और टू बी रिटन, एक ही बात है ना? खत लिखे जाने हैं, तो दोनों तरह से आप बोल सकती हैं, एक्टिव और पैसिव आर सेम हियर। सही है। Thank you, sir. तो कुछ पैसिव, कुछ प्रपोजिशनल वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ भी आप पैसिव वॉइस इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर प्रपोजिशन आ जाए तो आप लगा सकते हैं, जैसे मैंने इसमें लगाया है, आई एम फाउंड ऑफ बीइंग प्रेज्ड, या आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग। अब ये देखिए, बीइंग क्या है बेसिकली, ये जो है क्योंकि प्रपोजिशन की वजह से आगे जेरेंड आ रहा है, तो जहां भी आपको इंग्लिश में अगर प्रपोजिशन मिल जाए और उसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहें, तो आप बीइंग लगा के फोर्थ फॉर्म लगा थर्ड फॉर्म लगा सकती हैं। तो ये प्रपोजिशनल सेंटेंस तो है, लेकिन है पैसिव वॉइस में। ऊपर वाला देखें, एक्टिव वॉइस में मैंने बनाया हुआ है, आई एम गुड एट टीचिंग, क्योंकि उसमें हमें डूअर ऑफ एन एक्शन पता है। यहाँ पे आई जो है वो डूअर नहीं है, यहाँ पे आई जो है वो क्या बन गया? टारगेट बन गया। ऊपर वाले सेंटेंस में देख लें, आई डूअर ऑफ एन एक्शन है, आई एम गुड एट टीचिंग, तो ये फर्क है। नीचे वाला आई जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया है, ऊपर वाला आई सब्जेक्ट है। जी है तो आई, लेकिन एक जगह वो एक्शन रिसीव Please. कर रहा है और एक जगह वो एक्शन को रिसीव कर रहा है और एक जगह एक्शन परफॉर्म कर रहा है, यही तो फर्क है। दैट इज द डिफरेंस। ये आपको पता होना चाहिए, यू नीड टू नो। सही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जेरेंड और इन्फिनेटिव की अलग अलग लिस्ट है। अगर आप पूरी लिस्ट देखेंगी तो पूरी लिस्ट मिल जाएगी ना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक नजर, रुक जाए। अगर आप डालेंगे ना इंटरनेट पे वर्ब प्लस जेरेंड, तो देख लें पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको। Yes, sir.
Appear, manage, arrange, ask, care, choose, decline. अपने आगे जेरेंड लेते हैं, ये देखें, ये पूरी लिस्ट आ गई, ये देखें, अवॉइड, डिसलाइक, सेलिब्रेट, कंसीडर, ये देखें, ये हमेशा अपने आगे आईएनजी वर्ब लेंगे। ये देखें नीचे जुमले भी बने हुए हैं, नजर आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. देख लें, ये सारे वो वर्ब हैं जो अपने आगे जेरेंड लेंगे। ये रे, एडमिट, एक्नॉलेज, अप्रिशिएट, रिकॉल, ये देखें। और पीछे चल, वर्ब प्लस जेरेंड और वर्ब प्लस इन्फिनेटिव, ये देखें पूरी लिस्ट आ गई। ये ले, ये रे, लिखा हुआ है वर्ब्स फॉलोड बाय जेरेंड और नीचे लिखा हुआ है वर्ब फॉलोड बाय इन्फिनेटिव। ये देख लें, दोनों लिस्ट मिल गई आपको। ये रही, एग्री के आगे इन्फिनेटिव आएगा लेकिन डिले के आगे जेरेंड आएगा। अब ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए ना, ताकि मुझे पढ़ाने में आसानी रहे। अभी मैं पैसिव में जेरेंड और इन्फिनेटिव पढ़ाऊंगा आपको, तो इसलिए आपको पहले से मालूम हो कि ये वर्ब इन्फिनेटिव लेंगे और ये वर्ब जेरेंड लेंगे। सो इट विल बी इजी फॉर मी टू टीच। जब मैं पैसिव में आपको जेरेंड इन्फिनेटिव पढ़ाऊंगा तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये सर इस तरह पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं बोलता हूँ आई लाइक बीइंग प्रेज्ड, आपको पता है लाइक के आगे जेरेंड आएगा, आपको पता है अच्छा अच्छा अच्छा। मैं बोलता हूँ आई होप टू बी सिलेक्टेड, तो आपको पता है होप के आगे इन्फिनेटिव आएगा। तो आपको पता होगा तो आप पैसिव में भी यूज कर सकती हैं, नहीं पता तो आप पैसिव में यूज नहीं कर सकती। तो ये नजर आ रहे हैं आपको, लिस्ट नजर आ रही है? देख लें, Yes, sir. Yes, sir. ये देखें, ये वर्ब प्लस जेरेंड की लिस्ट है और ये वाली वर्ब प्लस इन्फिनेटिव की लिस्ट है नीचे। ये देख लें, ऑफर, प्लान, पोस्टपोन, रिफ्यूज, वांट, वेट, विश, वुड लाइक, ये देखें। अब ये आप लोग थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा कि वर्ब प्लस जेरेंड के कौन से वर्ड हैं और वर्ब प्लस इन्फिनेटिव के कौन से वर्ब हैं। तो कुछ थोड़ी बहुत बत्ती जली कि बुझ गई? Yes, sir. क्या आप लोग बोर हो गए? आप लोग बोर तो नहीं हो गए? आप लोग यार सर क्या चक्कर में फंसा No, दिया sir. हमें। Sir, this is first time main detail. Not डिटेल इज टू bored, but मच। confused. कंफ्यूजन तो होगी ना, क्योंकि अभी आपने पढ़ा ही नहीं है प्रॉपर्ली। अभी आप इन्फिनेटिव और जेरेंड आप प्रॉपर्ली पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा किस तरह जुमले बन रहे हैं, नहीं ना? फिर इंशाल्लाह मैं आपको कल कोशिश करूंगा, पहले आप लोग वर्ब और जेरेंड की लिस्ट याद कर लें, तो फिर मैं आपको पैसिव में जेरेंड और पैसिव में इन्फिनेटिव पढ़ा दूंगा कि पैसिव में इन्फिनेटिव और पैसिव में जेरेंड कैसे बनते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए। Right, sir. Inshallah. सही जी? Okay, sir. मे बी अनदर टीचर इज वेटिंग। सर Time is मिक्सअप up. हो जाएगा अगर इस तरह से याद भी करेंगे तो। याद करेंगे तो हो गया, याद तो करना पड़ेगा आपको। देखिए मुझे तो सारे याद हैं, अब आपको याद करना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ताकि क्योंकि मैं आपको जब कल जेरेंड और इन्फिनेटिव पढ़ाऊं पैसिव वाइज में, तो आप परेशान ना हो। आप ये ना बोले कि सर वो जेरेंड और इन्फिनेटिव क्या है। असल में जेरेंड और इन्फिनेटिव खुद एक बहुत बड़े टॉपिक हैं इंग्लिश के अंदर, अलग टॉपिक हैं। दे आर वर्ब्स, ये दोनों भी सपोर्टिंग वर्ब्स हैं। इनको इंग्लिश में कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इनका इंग्लिश में नाम है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इंग्लिश में वी आर कॉलिंग देम नॉन फाइनाइट वर्ब्स। NATE. नॉन फाइनाइट वर्ब्स।